वेलकम बैक क्लास 7 स्टूडेंट्स। मैं हूं डॉक्टर दीपक और हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी में बेटा हम पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स में हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स बात कर चुके हैं। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में अगर हम बात करें तो आज हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसमें हम एनिमल्स की और ह्यूमंस की बात करेंगे। सो इन डाइजेशन क्या होता है बेटा? व्हाट इज डाइजेशन? डाइजेशन होता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को छोटे सब्सटेंस में तोड़ना और फिर उसका एब्जॉर्प्शन एंड ऑल। सो डाइजेशन इन ह्यूमंस में वी हैव सीन इन प्रीवियस सेक्शंस दैट वी नीड फूड टू गेट न्यूट्रिएंट्स that are required for proper functioning of the body. In order to make the food material absorbable, we need to digest the complex food particles into the simpler food particles. So complex food particles को simpler substances में convert करने के process को हम कहते हैं digestion. Okay, so let's begin with the steps of nutrition in humans. Humans में nutrition के क्या क्या steps होते हैं? सबसे पहले होता है बेटा ingestion. Ingestion, in मतलब inside. So taking inside of anything, any food is called ingestion. So taking in. So first of all हमने ingest किया food को अपने मुंह के अंदर. Then is the process of digestion. I told you about digestion. What is digestion? कि complex substances को simpler substances में तोड़ना. ठीक है? So complex substances को simple substances में तोड़ना is डाइजेशन. अब डाइजेस्ट हो गया, सिंपल सब्सटेंसेस बच गए, अब इनको हमें एब्जॉर्ब कराना है बॉडी में. ठीक है? सो हियर कम्स द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन कि जो डाइजेस्टेड मटेरियल है उसको एब्जॉर्ब करना. नाउ द फोर्थ प्रोसेस इज एसिमिलेशन. अब जो एब्जॉर्ब हो गया हमारा डाइजेस्टेड फूड, इस एनर्जी को हमें यूज करना. काइंड ऑफ यूजिंग द एब्जॉर्ब्ड एनर्जी. यूजिंग द एब्जॉर्ब्ड एनर्जी इज एसिमिलेशन. So using this absorbed energy is called assimilation. And finally जब सारा हमने यूज कर लिया है उसके बाद जो undigested material रह गया है उसको बाहर निकालना is called egestion. Ingestion is taking in and egestion is out. Moving it out of the body is called egestion. These are the 5 basic steps in the human nutrition. So steps in nutrition, it involves 5 major steps. 5 major steps we have covered already: ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. So in ingestion I told you the intake of the food is called ingestion. Okay, then is the digestion, process of breaking down of complex food material into simple substances. Now third is the absorption, the process of absorbing the energy from the food material. Then comes the assimilation. Assimilation is the process of using the absorbed energy, that is called as the assimilation. And egestion. Egestion is the removal of waste material from the body. So we need to remember these 5 basic steps of human nutrition. Okay. So all this you have to write in your fair notebook. How does it start and what is the meaning of ingestion? Then what is the meaning of digestion? Likewise you have to write this slide into your fair notebook. So moving ahead is the parts of human digestive system. Then we have to remember the steps involved in the human digestive system. So first of all we are going to cover the parts of the human digestive system. So human digestive system starts from the mouth. Okay, as soon as we take the food in the mouth, the human digestion system starts. So this is the starting point. Okay, mouth is the starting point. From mouth the food is going to go into the pharynx, from pharynx into esophagus, then into stomach, then small intestine, then large intestine, then rectum and then anus. This is the end point. Okay, so human digestive system starts from the mouth and it ends at the anus. Okay, so let's take a closer look at each part. हर पार्ट का फंक्शन देखते हैं, हर पार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज द माउथ. सबसे पहले आता है बेटा माउथ. सो डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम द माउथ. जैसे ही हमने फूड अंदर लिया इट स्टार्ट्स डाइजेस्टिंग द फूड. ओके, सो माउथ में क्या क्या होता है बेटा? वी हैव टीथ, वी हैव टंग एंड वी हैव सलाइवा. ये 3 पार्ट्स हमारे हैं जो डाइजेशन में हेल्प करेंगे. जो टीथ है बेटा, दे हेल्प अस इन बाइटिंग, टीयरिंग,
कुछ चीर फाड़ करके खाना है, कुछ चबा के खाना है, एंड देन चूइंग द फूड, ये सब काम करेंगे हमारे टीथ। उसके बाद टंग क्या करेगी बेटा, उस फूड को रोल ऑन करेगी चारों तरफ, और जो म्यूकस जो लार होती है हमारे उसको उस फूड के अंदर मिलाएगी। सो टंग से हमको टेस्ट भी आता है। सो द टंग इज मेंट फॉर टेस्टिंग द फूड एंड उस पूरे को म्यूकस से भरना, उस फूड को म्यूकस को मिक्स करना आपस में, ठीक है। सो नाउ माउथ कंटेन्स टंग, teeth and saliva. The food is chewed well with the help of the teeth and gets mixed with the saliva with the help of tongue. कह रहे हैं कि teeth से chew करेंगे और saliva mix होगा tongue की help से। Now let's talk about the teeth. We will talk about all three in detail. Number one, let's talk about the teeth. Teeth, we have 4 types of teeth in our mouth. Okay. Number one is incisors. Number 2 is canine. Number 3 is premolar, and number 4 is molar. Okay, so we are going to discuss this with the help of the diagram given in your book, different types of teeth. So in the center we have 4 incisors on the upper jaw and 4 incisors on the lower jaw. Fine. So we are dividing the mouth into 2. एक ऊपर वाले जहाँ होते हैं वो upper jaw और जो नीचे वाला पोर्शन है लोअर जो। ओके, सो अपर जो में 4 इंसाइजर्स, लोअर जो में 4 इंसाइजर्स, सो देयर 4 इन ईच जो। ओके, सिचुएटेड एट द फ्रंट, बिल्कुल सामने वाले होते हैं, ठीक है, फ्लैट है, स्ट्रेट है एंड शार्प एजेस हैं। फंक्शन क्या है बेटा इनका, जैसे आपको एप्पल को बाइट करना है तो आप कैसे करेंगे, तो दे हेल्प अस इन बाइटिंग, ओके, एंड कटिंग, सो यूज फॉर बाइटिंग एंड कटिंग ऑफ फूड। So this is what we have to remember about the incisors. Number 2 are the canines. Okay, canines are चारों incisor के साइड में एक canine इधर होगा, एक canine इधर होगा। So एक jaw में मैं बात करूं तो there will be 2. Okay, so canines are 2 in each jaw, situated on the side of incisors, and they're sharp and pointed. The incisors are sharp and pointed, and they are used for tearing. So जो canine animals होते हैं like tiger and dog, they need to bite the food, okay, tear the food. For that they use their canines. So they are used for tearing the food. Number 3 we have premolars. जो molars से पहले आएंगे premolars. Pre मतलब पहले. So molars से पहले जो teeth आएंगे वो होंगे premolars and they are 4 in each jaw. तो 4 होंगे upper jaw में, 4 होंगे lower jaw में. So 4 on in each jaw after the canines, and they help in crushing and grinding the food. Similarly, we have molars. They are 6 in each jaw. Upper jaw में 6, lower jaw में 6, and situated behind the premolars. Last में जो situated होते हैं वो होते हैं molars, और premolars के last में situated होते हैं. They are used for crushing and grinding the food. So molars and premolars are used for crushing and grinding the food, and canines are used for tearing, and incisors are used for biting and cutting the food. So we have to draw this diagram in fair notebook and also write the function of each type of teeth. So moving back to the previous slide, the incisors help in cutting, we have discussed. The canines help us in tearing, and the molars and premolars help us in crushing the food. Now we are done with the teeth. Talking about the saliva. Saliva is produced by salivary glands. हमारे माउथ में बहुत सारे salivary glands होते हैं बेटा. They produce saliva. So saliva is produced every time in our body, and saliva is a fluid that contains water, salts, mucus and digestive enzyme amylase. So saliva के क्या क्या contents हैं? Saliva contains water, salts, mucus and digestive enzyme amylase, which is most important. Amylase is the most important thing that the saliva contains, and you have to remember this, which helps in digestion of carbohydrates. The function of amylase is it helps in the digestion of carbohydrates. Now talking about tongue. Tongue contains taste buds which help us to taste. टंग में बेटा हमारे टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं दैट हेल्प यू टू टेस्ट कि द फूड इज सॉल्टी और इट इज स्वीट और इट इज बिटर. सो वी आर शोइंग यू द डायग्राम ऑफ माउथ. सो इफ यू ओपन योर माउथ वाइड, बहुत वाइड अगर माउथ ओपन करते हैं आप अपने फ्रेंड से खुलवाइए. सो व्हाट ऑल यू विल सी? You will see the gums, the pink thing. The pink thing shown is the picture is the gums. Then
if you will see at the end, बिल्कुल पीछे अगर आप देखते हैं, so you have a structure hanging down, ऊपर से नीचे एक स्ट्रक्चर ऐसे हैंग डाउन कर रहा होगा, उसको हम बोलते हैं uvula. Then on the sides of uvula there will be two circular spherical structures on both the sides. These are called as tonsils. Then we have a muscular structure, tongue, and we have these different taste buds on the tongue. The tip of it tastes sweet, for salty, behind the sweet, then sour, and then bitter at the end. Okay, so these are the taste areas: sweet, salt, sour, and bitter. Okay, so let's move to the next part, which is the pharynx. We are done with the mouth, then moving to the second part, which is the pharynx. So pharynx is a tube-like structure that connects mouth to esophagus. So we have done mouth, okay. So mouth के बाद जो food जाता है वो जाता है pharynx में, और pharynx से जो बाद में जाएगा, that it will be going in the esophagus, which is the starting part of the alimentary canal. So pharynx open into the esophagus through an opening called gullet. So let's see in this diagram. This is your mouth, okay. These are your lips. Then tongue is there inside. The food is here. Then it goes back here. So this part is the pharynx, okay. So pharynx is the part just where the mouth ends, pharynx starts, and it continues till here, till the time where we are starting the esophagus. This tube, this food tube starts here, esophagus, and this opening of pharynx into the esophagus, this is called as gullet. So let's move to the next portion, which is the esophagus. This is also called as the food pipe in simple language. It is a long muscular tube made up of muscles. So long muscular tube which food reaches to stomach through this, okay. So now the food has passed from mouth to pharynx, from pharynx to esophagus, and from esophagus it will be going into the stomach. The muscles of esophagus contract and relax continuously. So it is a muscular structure. So the muscles, they contract, then they relax, then they contract, then they relax. And this movement of contraction and relaxation is called as peristalsis. So peristalsis is an important movement of contraction and relaxation. The diagram for this is given in your book. Okay. So this is the food bolus which is shown here. This is the food. The yellow color bolus shown in the center. So above the food the muscles are in relaxed state, and where the food is present the muscles are contracting to push it down, okay, and below the food the muscles are again in relaxed state. So relaxation, contraction, relaxation, this whole cycle is called as peristalsis. That in the same tube at some points the muscles are contracted, at some points the muscles are relaxed, then contracted, then relaxed. This is known as the peristalsis. This movement is seen in the whole alimentary canal. I mean to say this will be seen in small intestine, large intestine, and stomach we have seen only. So now from esophagus the food is going to go into the stomach. So let's talk about stomach. Before that let me show you the whole diagram which is given in your book of the human digestive system. We have read about the mouth, okay. Then I have told you about the pharynx which is here. Then we have esophagus. From esophagus the food will be going into the stomach. So this portion is known as the stomach. From stomach it will be going into the small intestine. So this brown coiled part, this is known as the small intestine. Okay. On the periphery the large pink, these are known as the large intestine. There are different parts of large intestine which will be telling. Then we have rectum followed by anus, which is the last part of the human digestive system. On the left side of our body we have stomach. On the right side we have liver. We will be talking about liver also in detail. So moving ahead to the fourth part, which is the stomach. So food from esophagus enter into the stomach. Stomach, we have to remember two major points about stomach, that it has the digestive juices and it has a lot of acid in it. So it contains digestive juices, the gastric juice, and the hydrochloric acid, HCl, which helps in the digestion. So
protein digestion starts in stomach and carbohydrate digestion starts in the mouth with the help of salivary amylase. So if I talk about protein digestion, it starts in the stomach. This is the important point. So in about stomach, you will be writing in your notebook that the esophagus opens into the stomach and it contains digestive juices, and it also contains a lot of acid, hydrochloric acid, HCl, and the protein digestion starts in the stomach. So moving ahead to the fifth part of the human digestive system, the small intestine. Why is it called small? Small means the diameter of the pipe is small, so less. So that's why it is called as small intestine. This is the major site of absorption. But the major site of absorption also the major site of digestion. जितना भी part अब undigested बचा है वो सब कुछ digest होगा small intestine में, और absorption for the first time will be starting in the small intestine. So small intestine is the long tube. It's long but less in diameter, okay, which contains finger-like projections called villi. So if this is a tube which is small intestine, we have finger-like projections. These are called as villi. तो बेटा इससे क्या होगा, इन finger-like projection से जो है इसका surface area बढ़ जाता है. अब surface area बढ़ गया है तो absorption easily हो पाएगा. So this villi help in the absorption of a food. So villi help in the absorption of nutrients and energy into the blood after digestion. Digestion gets completed in the first portion of small intestine. So digestion यहाँ complete हो गया बेटा. It contains intestinal juices which will help in the digestion, and apart from this, secretion from liver, pancreas and gallbladder are also drained in the small intestine. So liver secretes bile juice that helps in the fat digestion. लिवर जो होता है बेटा वो बाइल जूस सिक्रीट करता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में निकलता है और वो हमारे फैट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है. जो पैनक्रियाज है वो पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करेंगे विच विल हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स. सो अब इंटेस्टाइन में अपने इंटेस्टाइनल खुद के जूसेस हैं, उसके अलावा लिवर ने बाइल डाला है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो कि फैट के डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा. उसके बाद पैनक्रियाज ने अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स डाले हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करेंगे. सो द मेजर पार्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन हैपेंस इन स्मॉल इंटेस्टाइन. सो दिस इज द लिवर शोन इन योर बुक. सो लिवर में बेटा क्या होता है, वी हैव अ पोर्शन हियर डिवाइडिंग दिस इनटू लेफ्ट लोब एंड राइट लोब. ठीक है, लेफ्ट लोब छोटा होता है, राइट लोब बड़ा होता है, और लिवर के जस्ट नीचे होता है बेटा गॉल ब्लैडर. दिस ग्रीन थिंग शोन इज द गॉल ब्लैडर. ओके, सो गॉल ब्लैडर से बेटा जो कॉमन बाइल डक्ट निकलेगी, एंड दिस कॉमन बाइल डक्ट दिस ओपन्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन जहां पे ये बाइल को ड्रेन करेगी. ठीक है, सो दिस ओपन्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन जहां पे ये बाइल को ड्रेन करेगी और जो बाइल है वो हमारे फैट के एब्जॉर्प्शन में और डाइजेशन में हेल्प करेगा. सो मूविंग टू द सिक्स्थ पार्ट विच इज द लार्ज इंटेस्टाइन. सो लार्ज इंटेस्टाइन बेटा क्या होगा, डायमीटर में वाइड होगा. सो इट इज लॉन्ग ट्यूब वेयर रीअब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस, ओनली रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. ठीक है, वाटर इज रीअब्जॉर्ब्ड इन द लार्ज इंटेस्टाइन. रीअब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व्स टेकिंग वाटर बैक इनटू द बॉडी फ्रॉम अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल्स. सो जो अनडाइजेस्टेड पार्ट अब यहाँ बच गया बेचा, उसमें से जो वाटर है दैट वाटर विल बी रीअब्जॉर्ब. सो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है. उसके बाद जो आता है बेटा रेक्टम. रेक्टम होता है बेटा हमारा टू स्टोर द वेस्ट मटेरियल. ठीक है, सो आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द लार्ज इंटेस्टाइन जो बच जाता है, ये दिस वेस्ट मटेरियल इज स्टोर्ड हियर टेम्परेरीली. ठीक है, व्हाट इज रेक्टम? रेक्टम इज अ स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर, मतलब एक बैग जैसा स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हमारा वेस्ट मटेरियल स्टोर हो सकता है टिल द टाइम it is excreted out. जो eighth and the most important and the last part of the alimentary canal or human digestive system is the anus. ठीक है, so this is the opening at the end of the digestive system through which the waste is released outside the body. So this is all about the human digestive system.
Tomorrow we are going to talk about the steps involved in the human digestive system. Till then, stay safe and keep smiling. Thank you so much.